India, a country with nearly 1.5 billion inhabitants. Architectural wonders and millions of pedestrians strolling the streets every day. Roads here are used by many, which can often lead to confrontations. Everyone must assert their presence. There are buses, cars, but also tuk-tuks and bicycles. It's a cacophony of incessant horns. In this former British colony, people drive on the left. Scooters zigzag through the traffic, transporting 3 or 4 people, often without helmets. India holds a sad record, the highest number of deaths on the road in the world, 150,000 deaths every year. Almost half of the victims are two-wheelers, cyclists and pedestrians. With 450,000 accidents per year, the country alone accounts for over 10% of the world's accidents. North India is the most accident-prone region of the whole country. This area stretches from the capital New Delhi to the Himalayas. Mountains with roads that reach more than 4,000 meters above sea level. But mountain roads are not the only ones presenting danger. Around the capital, the Delhi-Meerut Expressway is one of the deadliest roads, with more than 1,000 deaths on average every year. Wrong side से आ रहे एक ट्रक से हो गई, जिसमें इस कार में मौजूद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई. During winter months, a thick fog caused by the pollution engulfs the Indian capital, causing many accidents. On these roads, there are cars as well as horse-drawn carriages, wagons going the wrong way, and buffaloes and cows crossing the roads. In the valleys of Ladakh, we accompanied a truck driver who drove 1,200 kilometers on the side of a mountain without safety barriers, at risk of falling into the void. मतलब 1% चांस बचने की नहीं है फिर गाड़ी की गाय उस बंदे के जे फिर गया तो फिर समझो भाई जिंदा वापस नहीं. On the outskirts of New Delhi, Inspector Lokesh Kumar's team operates on roads where fatal accidents are a daily occurrence. On the Delhi-Meerut Expressway, Inspector Ahmed has to deal with drivers who take reckless risks. Behavior that puts their lives and the lives of others at risk. अगर मेरे पास हेलमेट ना हो तो मैं आज मर ही गया होता. From the plains surrounding the capital to the Himalayan peaks, we take you on a journey through the roads of northern India, the scene of nearly 250,000 accidents every year. The city of Ghaziabad, in the suburbs of New Delhi. It's 3 p.m. when Inspector Padam Singh's patrol is called to an accident. The first reports indicate that a truck has driven off the road. आप कंडक्टर हैं ड्राइवर हैं? कंडक्टर हैं. क्या हुआ था बता. आप हटो साइड में. पता नहीं उसका क्या हुआ क्या नहीं. एकदम से गाड़ी इधर पड़. The truck driver fled the scene in fear of the consequences. The mechanic who was travelling with him is the only witness still on the scene. The police must question him to understand the cause of this accident. इसको चेक करो इसका ब्रेक तो नहीं फेल हुआ है. पता नहीं ब्रेक फेल हुआ क्या हुआ तो उस्ताद को पता जी. देखो हम तो हेल्पर आदमी एकदम से गाड़ी करके चली गई. तो ड्राइवर आज अभी पता लगेगी. हाँ जी. ज़्यादा चोट तो नहीं. चोट तो किसी की नहीं आप गई है बस. ना बस ये थोड़ी बहुत जो भी है. Inspector Singh suspects the truck driver fell asleep while driving, a very common cause of accidents on the roads of India, where truck drivers sometimes travel thousands of kilometers without taking a break. रात में चली थी. हाँ रात में गाड़ी आई थी अभी खाली होकर आ रही थी. ये लग रहा है ड्राइवर को नींद आ गई है. हाँ जो भी है सर. बस क्यों कोई बांध तो था नहीं कोई घटना हुई. अभी रात में खाली रही. मैंने अभी खाली हुई थी थोड़ी देर पहले. अच्छा रात में गाड़ी चलाई है. कहीं नहीं एक्सीडेंट हुआ है. क्या करेंगे. देखना ब्रेक तो सही है. While the police are organising the extraction of the truck, an accident happened on the other side of the road.
To get there, Inspector Singh has to cross the highway, avoiding cars travelling at more than 90 kilometres an hour. लग रहा है टेम्पो वाला स्लो चल रहा है, वो आगे से आगे उसने ठोक दिया। At this speed, a collision would be fatal. On this road, there is no pedestrian crossing. छोटू निकाले ना, क्या हुआ? टक्कर मार दी। ये लोग कहाँ गए? आपके और अकेले ही हो आप? इसका टेम्पो है, ये टेम्पो आ गया मेरे आगे, पीछे उसने टक्कर भर के मार दी कतई। ये गाड़ी वाला भाग गया है? ये रहा यहीं पे। मोटरसाइकिल वाला टेम्पो में लग गया। कैसे हुआ था, कैसे लगी थी? हुआ क्या, मेरे सामने बराबर में रोडवेज ने ब्रेक मार दी। अच्छा। अचानक से एकदम उसके आगे कार वाले ने एकदम ब्रेक मार दी, उधर जाने की टक्कर में। मेरी कोई गलती नहीं है, पीछे से पूरा भर के इन्होंने टक्कर मारी, मैं आगे जाके ऑटो में लगा हूँ, आगे से ऑटो के बीच में, पीछे से बाइक टूट गई। Leaving with minor injuries, this biker avoided the worst. ये नहीं ले पाएगा, ले चल नहीं से लाइट ऑन कर, वहाँ साइड में ले जा। ये बाइक किसी की है? उधर ले चल, चलो छोटू बड़ा काट में लगा, थोड़ा रोड रुकाना, रोड रुका इनको। Inspector Singh now has to deal with the remaining paperwork between the motorcyclist and the other vehicles before he can let them go. On this expressway, speeding, lack of attention and careless driving habits are the main causes of accidents. Emergency services report more than 50 every day. Here, a truck has capsized, killing a scooter driver. The second driver miraculously escaped. Inspector Padam Singh, who has been patrolling this expressway for more than 10 years, has witnessed hundreds of severe accidents during his years of service. ये दिल्ली से आ रहा है, ये मेरठ हाईवे है, ये इधर जा रहा है सर, ये जा रहा है दिल्ली से और ये मेरठ हाईवे है। उसके बाद ये NH9 है सामने आपके। इंडिया में रोड तो बढ़िया बढ़िया बन गई हैं और लोग आज नियम का पालन नहीं करते। वो ये है कि ये लोग ज़्यादातर पुलिस चालान भी खूब काटती है और लोग आगे नहीं सुधर रहे हैं। हम लोग को ट्रैफिक को रोकना मुश्किल हो जाता है, ट्रैफिक की चुनौती है, बड़ी तगड़ी स्पीड में आते हैं और रात में एक्सीडेंट, तो एक एक्सीडेंट हुआ तो रोकते नहीं है, दो तीन एक साथ हो जाते हैं एक गाड़ी रुकने से। स्पीड में चलते हैं लोग, उसको ले जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल सब नज़दीक है उसको। On this highway, the speed limit is 100 kilometres an hour for cars and 80 for two-wheelers. Despite these regulations, accidents are very common. Some of them involve slow-moving tractors that have become a real danger for other drivers. There is a very particular cause for accidents on this expressway. Carts drawn by buffaloes and horses travel on it every day. These makeshift vehicles travel on the highway in the middle of traffic, with vehicles speeding at nearly 100 kilometres an hour. For Inspector Singh, the priority is to get these carts off the highway before they cause an accident. मने करते हैं, चालान भी काटते हैं। देखिए बैलगाड़ी है, अब क्या करें, मानने या किसान है, अभी कहेंगे लड़ने को तैयार हो जाएगा। मेरा घर यहाँ है, मैं तो यहीं से जाऊँगा। समस्या ये आती है, लोकल का आदमी मानता नहीं है, इसी वजह से घटना घटती है। भैया ये इतना हाईवे चल रहा है, इसे लेके चल रहे होने का सुबह या शाम ऐसे जाम में खाली जाम में आया करो। अब ये जानवर है, इधर उधर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, घटना दूसरे होगी आपको। सर आप ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। The inspector explains the risks of operating these animal-drawn carts to the farmers here. अब दोपहर का जो टाइम है,
अब दोपहर के टाइम में कम वाहन मिलता। हाँ जी, अब जो सब सुबह के टाइम में ड्यूटी वाले निकलते हैं और शाम के टाइम भी ड्यूटी वाले निकलते हैं, तो इस करके अब दोपहर में इसलिए निकाला। अब कम वाहन मिलेंगे, ड्यूटी वाले मोटरसाइकिल वाले नहीं मिलेंगे। हाईवे पे भाई ये चलना वाहन ये मना है, थोड़ा बाकी इनको लेट में निकालो, रात में निकालो, खाली रोड जब निकालो, दोपहर का टाइम हो रहा है, 12-1 बज रहा है। अब भिड़क जा, अभी किसी को अपने को मरोगे, दूसरे को ले मरोगे। हाईवे है, इधर उधर तुरंत भिड़कता है। बिल्कुल आप देख रहे हैं, पर हमारे तो To save time on their daily commute, these locals refuse to use the small adjacent roads. They prefer to run the risk of driving on the highway, putting their lives in danger. Only 10 minutes after the first one, another cart approaches. गाड़ी चलना मना है, बैलगाड़ी, आपको पता नहीं हाईवे है। नीचे के रास्ते जाया करो, वहाँ देहात वाले सपने से। अब यहाँ लेके आगे कोई बात हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप तो अपनी सुविधा देख रहे हो, ये सब बैठा ले भी इतने लोग रोक ले, जितने लोग बैठे अभी कहीं भिड़क जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी आ जाए, भाई देहात के पीछे के रास्ते से आओ, बड़ा रोड हो गया। इनका कहने का मतलब है सर कि हम पहले से यहीं से जाते हैं। We return back to the scene of the crashed truck with the driver on the run. Local residents came to help in an effort to pull the heavy truck out. Inspector Prashant Yadav is in charge and secures the scene. काफी वेट है गाड़ी में ना, तो क्रेन पीछे से उठाएगी, जेसीबी नीचे से हिलाएगी, तभी निकल पाएगी। क्रेन लगी हुई है पीछे, एक क्रेन से नहीं उठ सकती। An excavator and a crane are used to clear the concrete blocks on which it landed. There is no time to waste. With the truck blocking part of the road and vehicles still passing, the risk of another accident is increasing by the minute. ट्रैफिक रहता है, काफ़ी पेरिफेरल है और घटनाएं होने की संभावना है, तो अभी निकल जाएगी, रोड खाली हो जाएगा। But things aren't going as planned. The operation is taking time and more cars are passing by the accident area. वेट काफ़ी है, वो फंसा हुआ है, इसमें वेट बहुत सारा हुआ है, फंसा हुआ है, पत्थर है ना, वो टायर के नीचे आ चुके हैं। टायर जमीन ज़्यादा देर तक यहाँ रहेगा ना, तो ये इसलिए इसको अभी निकलवाना बहुत ज़रूरी है। The locals have been working for more than half an hour and have finally freed the wheels of the truck. भाई ये सीधी साइड में कर दो, साइड। After more than an hour of effort, the truck is finally released. The concrete block is still stuck, but the truck has been moved and traffic can continue as normal. ले जाओ। In winter, this expressway linking the capital of India to the city of Meerut is regularly engulfed in a thick fog caused by pollution. It's a daily challenge for the police officers who have to intervene several times a day on accidents caused by the lack of visibility. It's barely 6 a.m. when Inspector Lokesh Kumar receives his first call. हेलो, हाँ सर, PRB 81 से बोल रहा हूँ। पेरीफेरल पे दादरी साइड में जा रहा है, वहाँ पे अभी किसी व्यक्ति ने हमें आगे बताया। A car with 5 students crashed into the back of a truck at full speed. Upon arriving at the scene, the police officer fears that someone is still trapped in the car. The front of the car was completely destroyed by the impact. The engine got stuck under the wheels of the truck, thrusting all the passengers towards the windshield. This young woman is one of the injured.
जो चला रहा था गाड़ी आगे एक ही था, 2 जने थे While the inspector secures the scene, the last of the injured is put in an ambulance. चलो भैया बैठो आप इसमें भैया, कोई बात ना, मैं आ रहा हूँ कैसे। आप बैठो बैठो, आप भी बैठो बैठो, अरे चोट लगी आपको, बैठ जाओ। अरे यहीं अस्पताल है, परेशान ना हो। Every second is crucial to get the victims to the nearest hospital. चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ ना, चोट लग गई इनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी मौके पे आ गई है, अगर एम्बुलेंस नहीं आती तो फिर हम लेके जाते हैं। 5 students in total were injured in the accident. आप पीआरबी से बोले 2182 का एक्सीडेंट हो गया दादरी की तरफ, यहाँ ट्रक के नीचे कार घुस गई, उसमें 3-4 घायल हैं। घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा, तो वहाँ अपनी पीसीबी भिजवा दो मौके पे। On this expressway, police respond to more than 10 accidents like this every day. कितना खतरनाक है, एक तो ब्रेक की टाइम। और मैं थोड़ा एक्सीडेंट की ज़्यादा खतरा, तकरीबन 3 बार हुआ। In winter, every week, 50 fatalities are recorded on average. दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से बड़ी खबर आ रही है, जहां कोहरे की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है। 15 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। घटनास्थल से तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोहरा इस हादसे का कारण बताया जा रहा है। आगे कोई रेड लाइट वगैरह लगा दीजिए कुछ। This footage shows several cars crashing into each other at high speed due to thick fog. The victims try to get out of the vehicles as quickly as possible. 15 cars were involved in this accident. As a result, 4 people have died. On these roads in northern India, nearly 90,000 people lose their lives each year, a record number, making this region of the country one of the deadliest in the world. We are back with Inspector Lokesh Kumar's men who've just arrived at the hospital. Due to lack of resources, it's impossible for this hospital to provide several stretchers for the victims. They will have to walk by themselves to the entrance of the emergency room. Among the 5 victims, 1 is in critical condition. Doctors suspect internal bleeding. Despite the seriousness of the injuries, the passengers were extremely lucky. हाँ, अक्सर होता रहता है, कभी दिन में हो जाता है, कभी रात में। आपको क्या लगता है इस एक्सीडेंट की वजह क्या थी? ड्राइवर की कमी थी, ड्राइवर को नींद आने के कारण एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि ट्रक तो चल रहा था सीधे हाथ पे, अपनी साइड में चल रहा था, इन्होंने। The students are responsible for the accident. The driver of the truck was taking a break on the side of the road after having travelled more than 2,000 kilometres to deliver his cargo. And, like many drivers, he was coming from the very north of India, from the highlands of Ladakh, an arid area at more than 4,000 metres above sea level. The area is bustling with trucks transporting merchandise. 250 trucks on average transit here every day. Drivers often have to deal with roads blocked by rocks and landslides, as well as altitude sickness. Prakash Chand has been taking this route for over a decade. Today he's preparing to make a 2-day crossing, a trip he makes 3 times a month. He will start his journey in the middle of the night to avoid any traffic. तेल पानी जो है गाड़ी का चेक होगा आगे, बाकी जो टायर की हवा वगैरह, टायर वगैरह देखेंगे अभी हवा का प्रेशर ठीक है कि नहीं है, तो अभी जनाब चेक करेंगे उसको। इंजन ऑयल का जो होता है ना, चेक करना पड़ता है। अभी देखना पड़ेगा पूरा है अभी कि नहीं, कम तो नहीं हो गया है।
टायर चेक कर रहा हूँ ना, जो हमारा टायर चेक करने का जो तरीका है ना, वैसे आवाज़ दोनों में सेम ही है। He's going to transport 12 tons of cement from Manali to the northern city of Leh, more than 400 kilometers through the mountains. नीचे गिर के फिर बचने का चांस कोई नहीं है ना। सड़कियाँ रोड के साथ किनारे जो नीचे खाइयाँ हैं उसमें तो फिर बड़ा मुश्किल है। मतलब 1% चांस बचने की नहीं है फिर गाड़ी की, गाय उस बंदे के चाहे फिर गया तो फिर समझो भाई जिंदा वापस नहीं है। तो इससे बेहतर है कि गाड़ी बिल्कुल जो है ना आराम से और सावधानी से चलाओ। चलो फिर। Only the most experienced of drivers can travel these roads, which can reach over 4,000 meters above sea level. After a few hours, the first problems appear. Prakash starts to feel altitude sickness. Symptoms that must be taken very seriously, as in this hostile environment, help is not always immediate. प्रॉब्लम होती है, सिर में दर्द होती है, फिर ILT में सो भी नहीं सकते ना। अगर सोएंगे तो फिर रात को सिर दर्द करेगा, जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए बेहतर है यही है कि हम दारचा में ही नाइट स्टे करते हैं, फिर सुबह आगे की ट्रैवल जो आगे की जर्नी होती है वो सुबह ही शुरू होती है। He must now make sure he arrives as quickly as possible at the next city. The narrow road is only lit by the truck's headlights, and the unstable rocks that line the mountain could fall at any point. गाड़ी के ऊपर गिर गया फिर तो ना गाड़ी ना फिर बंदा, दोनों में से कोई कैबिन के ऊपर गिर जाए तो, अगर पीछे गिरा तो शायद बच जाए। उनके साथ हुआ था वैसा, जो मैंने बताया था कि वो 2 बंदे ख़त्म हो गए थे, तो पत्थर गिरे थे उनकी गाड़ी के ऊपर, पत्थर गिरे उनके कैबिन के ऊपर, कैबिन के अंदर ही दब गए हो। मेरे साथ तो नहीं हुआ, और एक बार रात को पत्थर आ गए थे, जैसे यहाँ मेरे गाड़ी के आगे 50 मीटर आगे पत्थर गिर गए थे रात को। क्योंकि जो हाइट वाले जो टॉप है ना, वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि वहाँ पे तो मतलब चलना तो छोड़ो, हवाई जहाज़ भी, मतलब जो हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू करते हैं उनको भी दिक्कत होती है जहाज़ उड़ाने में। At Ladakh crossing, fatal accidents happen every week. In this footage, a truck was blocked by a rock slide and was in an extremely dangerous position. A huge rock comes loose and crushes it. Here, the slightest deviation sends vehicles into ravines of more than 200 meters, not leaving any chance for the passengers. Prakash takes us to a scene of an accident that cost the lives of 3 of his colleagues. गाड़ियाँ नीचे गई हुई हैं, देखो नीचे 1 2 3 गाड़ियाँ जो गई हुई हैं। ये जो यहाँ पर जो पानी जमता है ना सर्दियों में, तो ये गाड़ियाँ वो पानी जमने की वजह से नीचे ना स्किट हो गई, तो अब नीचे चली गई। अब इनको अब ये यहीं, अब इनको काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी साल हो गया, अब इनको यहाँ से निकालने का कोई सोर्स नहीं है, तो अब ये गाड़ियाँ यहीं जो लो है जो भी है यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आप जो BRO का रोड है उसमें सभी जगह आपको ऐसे ही साइन मिलेंगे, जो स्लाइडिंग एरिया होगा, सिंकिंग एरिया होगा, जो भी होगा वहाँ पर BRO वालों ने पहले से ही साइन बोर्ड लगाए होते हैं। तो कई क्या करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो Cold weather here makes these roads even more difficult to navigate. The smallest puddle of water becomes a potential danger. हाँ, सबसे खतरनाक पॉइंट है ये, क्योंकि ये साथ में पानी है ना, ये पानी ने सारा जो रोड था वो रोड ख़त्म है, मतलब पत्थरों के ऊपर से ही गाड़ी निकालनी पड़ती है। ये देखो यहाँ पानी जमा हुआ है ना, तो यहाँ गाड़ी स्किप करती है।
The truck is only about 10 kilometers away from its final destination. आराम से निकालनी पड़ती है गाड़ी, बिल्कुल आराम से। On the other side of the bridge, a couple of bikers almost crash into the truck. हट जा। वो तुम लोगों को दिमाग है कि है नहीं? ओ यार, तुम लोग बंदे हैं क्या तुम लोग? ये इनको दिमाग तो होता नहीं है, आ जाते हैं ऊपर से उठ के सीधे ही। इनको पता गाड़ी आ रही है, अब गाड़ी यहाँ ब्रेक लगवा दी, अब उठेगी भी गाड़ी की नहीं उठेगी पता नहीं। अब इनको पता है भी नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं, पहले भी गाड़ी क्रॉस करके गई थी तब भी आगे आ रहे हैं। थोड़ा भाई आप कर दो आगे बाइक, थोड़ा आगे कर दो। After 2 days on the road, the driver gets to his destination safely. By next week, he will have to leave again to deliver new cargo. Once again, he will take the mountain roads, which claim 2,000 lives every year. "500 kilometers further south, there is another road, one of the most perilous of the Himalayas. The Kishtwar Road, peaking at more than 2,000 metres above sea level and bordered by dizzying cliff drops. On average, 50 accidents happen here every month. Landslides and fatal accidents are a common occurrence. Despite this danger, a group of 7 bikers decided to travel along it. These Frenchmen organise adventure trips on Royal Enfields that are very popular in India. It is a new model of motorcycle, similar to old English ones. For these expeditions, a motorcycle licence is mandatory. These experienced bikers must prepare for any circumstance and leave nothing to chance. Quand on part sur ce type de route, le premier gros sujet, ça va être la qualité du châssis, vérifier qu'il n'est pas craqué, qu'il n'y a pas de fissure. Puis on vérifie évidemment la fourche à l'avant. Le deuxième sujet important, ça va être les pneumatiques avant-arrière, donc pour avoir une bonne adhérence. On est amené à rouler sur des routes vraiment compliquées, sablonneuses, rocailleuses. On va passer de la rivière. For Matthias, it's a first. He's never travelled this road before. Within 24 hours, he will have to face the most dangerous part of the road at 3,000 metres of altitude. One that is nicknamed the Cliffhanger Road, a road on the side of a cliff with drops of more than 300 metres. The team will leave with a support car that will transport everything they need. Matthias makes sure everything is in order. On a les valises, on a de la nourriture, on a les sacs, derrière les sacs, tent we have. C'est vachement important parce que sur la route, on va pas trouver beaucoup de boutiques où acheter tout ça. Donc il faut prévoir des jerrycans, on a un oxygène cylinder parce qu'on va en altitude. Donc ouais, il y a certaines personnes qui peuvent réagir plus ou moins bien à l'altitude. On a de la nourriture, on a des tentes et des sleeping bags, donc des sacs de couchage au cas où si on a des éboulements, on peut dormir sur place. The French bikers leave from the city of Manali bound for Srinagar in the north, in the Kashmir region. A one-week journey of nearly 1,000 kilometres, travelling the most difficult roads in the world. They will cross several mountain ranges and face extreme conditions. They encounter some difficulties only a few hours after their departure. Et tu vois, il y a plein de petits cailloux qui sortent comme ça des montagnes, ça fait dévier ta roue et tu peux rapidement te retrouver dans la direction opposée et tomber quoi. The bikers are still several hours away from the most difficult part of their journey and the conditions are already getting dangerous. Donc là, des bons tournants bien serrés.
avec un précipice de 500 mètres sous nous. Donc ouais, on essaye de coller à droite sur le plan de la montagne et de la falaise le plus possible pour éviter de se retrouver avec des cailloux qui nous emmènent vers la pente, quoi. Donc on vient de passer un tronçon là où il y a des camions qui se croisent. Il faut vraiment faire attention pour bien respecter les priorités, etc. Et faire en sorte qu'il y ait suffisamment de place pour tout le monde. Sinon, s'il y a un camion qui force le passage, il peut tomber. A month ago, a few kilometres from here, a bus fell due to a landslide. While transporting dozens of passengers, the vehicle got stuck on a very slippery part of the road. The driver tried to get them out of the dangerous situation. Its rear wheels got stuck and the bus was on the verge of falling into the void. After a few vain attempts, the bus tipped over into the ravine, taking the passengers on board with it. On these Himalayan roads, approximately 2,000 people lose their lives every year due to landslides, rough terrain and cliff drops. At the other end of the country, the National Highway 154, another infamously dangerous road. It crosses the region from east to west and is particularly popular with tourists who visit the area. Cars and motorcycles that travel on it every day at high speed are faced with sharp turns and very narrow stretches. Inspector Rajesh Kumar of the Kangra police has just been called to a road accident. There's no time to lose on this busy road. Every second increases the risk of an accident. वो NH 154 पर वो एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर दो बाइक और एक अल्टो कार जो है आपस में जो है टकराई हैं। उसमें जो है एक बाइक जो है स्किड कर गई है। हिली एरिया मैम देखो यहाँ पर स्ट्रेट है, आगे टर्निंग पर कर्व है, तो जिस स्पीड से सिविलियन पीछे से आ रहा है तो आगे तो स्पीड कंट्रोल करनी पड़ेगी ना उसको। उसी स्पीड से अगर इसको कर्व को काटेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही फिर। As he rushes to the scene of the accident, a careless driver catches his attention. भाई हेलमेट कहाँ हेलमेट है? ठीक है, हम लोगों को हेलमेट पहनना है हमारी सेफ्टी के लिए। A necessary reminder in this country where the majority of accidents involving motorcyclists result in fatalities. 29 एक्सीडेंट हो चुके हैं, 10 फैटलिटीज़ हो चुकी हैं, 33 इंजर्ड हो चुके हैं ओनली सितंबर मंथ। ये बाइक वाला पड़े थे वाला, ये बाइक है नहीं ये वाली, इससे टकराए हैं गड्डी, ये वाली गाड़ी है स्किड हो के टकराया है। स्किड ओवर स्पीड था, ये ओवर स्पीड में था ये बाइक ना, जो बाइक स्किड हो गई और इस गाड़ी से अल्टो कार से जो है हिट कर गई है आगे। The two people on the motorcycle were rushing to the hospital. It's now up to the district road police to figure out what really happened. बाइक ये 4.5 फुट मतलब के राइट साइड में चला गया हो, है ना, बिल्कुल अपनी उसकी साइड वो थी। कार का अगला टायर है ड्राइवर साइड का टायर, ये फ्रंट टायर 2 फीट पर है पक्के गोले पर। इट मीन्स इसने अपनी दिशा को देखते हुए और अंदर को चला गया, बचाने की कोशिश इसने प्रॉपर करी हुई है। Narrow stretches, pedestrians crossing the road, motorcycles and even animals.
a recipe for disaster. At the scene of the accident, Inspector Kumar and his men are concerned about the risk of someone crashing into the stationary car. गाड़ी को इसलिए हटाना है कि जो व्हीकुलर ट्रैफिक है उसको उस चीज़ को तो स्मूथ करना ना। गाड़ी इस हालात में नहीं खड़ी रहेगी ना, यहाँ आइडल पार्किंग के तौर पर थोड़ी खड़ी रहेगी। ये तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जब पुलिस की अपनी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो इसको भी चाहे टोइंग के तरीके से या गाड़ी चलने वाली हो तो उस तरीके से इसको तो हटाया जाएगा ना, क्योंकि NH 154 है, गाड़ी को यहाँ पर खड़ा नहीं किया जा सकता। We are more than 1,000 kilometres from the Himalayas, in the suburbs of the capital, New Delhi, back on the Delhi-Meerut Expressway. Here, the regional police face daily challenges as the drivers do not respect any rules. In India, the legal age for getting a driving licence is 18. A points system doesn't exist. Violations only result in fines, or, in the most serious cases, they result in a court hearing. Today, Inspector Ahmed's patrol is stationed at the exit of the expressway to penalise drivers who are going the wrong way, not wearing a helmet or speeding. आप यार हेलमेट नहीं पहन रहे हो, हटिए छोटे साइड। चलो सीधे कर लीजिए। लाइसेंस दीजिए, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। जाइए। सर क्या करोगे? हेलमेट का क्या चला? कैश करवाओगे या कैसे? 1000 रुपये हेलमेट के जमा करोगे? A huge fine for this biker and his family, €12, the equivalent of a quarter of a monthly salary for Indians of a modest income. After fining the biker, Inspector Ahmed takes a photo of the offending biker and puts it in the police database. अब छोड़ो जाओ, ये बाहर की ठीक है, जाइए। सर ये गरीब आदमी है, हम देखना ऐसे मत करो। 1000 रुपये 1000 आपका जो है हेलमेट का चालान है, ठीक है? आप चलो ठीक है, जाओ। आप जाओ कह दिया, जाइए आप आराम से। अब जो है जा करके आराम से चलिए जाए, ऐसे नहीं हड़बड़ाहट में नहीं है। आपको हड़बड़ाहट में नहीं चलना है, आराम से। आप वायलेशन कर रहे हैं तो वायलेशन में देखिए, जब आपको पुलिस रोक रही है, आप पुलिस रोके, आप इस तरह दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। Despite their prevention methods, the police see cases like this every day. As having 3 people on a motorcycle is tolerated on these Indian roads, the wearing of helmets is a real social issue. It's mandatory for the driver, but not for the passengers. लगभग मतलब 5% ऐसे लोग हैं जो विदाउट हेलमेट चलते हैं, जिनको समय समय पर हम लोग समझाते हैं, उनको प्यार से बताते भी हैं। जब वो नहीं मानते तो फिर उनको हमें मजबूरन चालान बनाना पड़ता है। लगभग 25 के लगभग हो जाते हैं। Inspector Ahmed just spotted a driver going the wrong way to reach the highway faster. वहीं रोक दो, वहीं उसे भी देख, उसे। To save a few seconds, ये है दुर्घटना का मेन कारण। This driver has endangered the lives of other road users. Unacceptable behaviour in Inspector Ahmed's eyes. थोड़ा पीछे ले लो, पीछे ले लो, पीछे ले लो। थोड़ा बैक। आ जाओ नीचे। पहले ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, उसके बाद बात करेंगे। आप ये रॉन्ग साइड आए। अरे आप रॉन्ग साइड हो ना अभी इस टाइम। आप देखो ना, ये यार इससे मतलब नहीं है। आप रॉन्ग साइड आना। अब कहाँ जाना है वो बात में। आप रॉन्ग साइड नहीं आएंगे, दोबारा ध्यान रखना इस बात को। चलिए जाइए, चलो आओ इधर आओ, निकलवा दो। Only a few minutes later, the police stop a motorcyclist for driving the wrong way without wearing a helmet. ये तरीका रोकने का। नहीं साइड में क्यों कर ले? अब क्यों साइड आ जाएगा? तू हट जाएगा, तू सामने हट जा। अरे पीछा करना यार, इज्जत से बात कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही? बस लाइसेंस दीजिए, लाइसेंस अब कर ले, अब आराम से लिया। साइड नहीं लगा रहा था, ऐसे भाग थोड़ी रहा है। भाग कैसे जाएगा? On these Indian roads, such infractions are not rare. To
take a missed exit or a shortcut, drivers do not hesitate to drive several kilometres in the wrong way. For most Indian motorcyclists, wearing a helmet is optional. We head back to the French bikers. A little further down the road, a problem has just occurred with a member of the team. The support car with the mechanic Kichu on board is rushing to get there as soon as possible, but there are many obstacles on the road. The vehicle has to travel alongside cliff drops of more than 300 metres and cross a waterfall before joining the rest of the team. Kishuji! क्या काम है? Oh, look. Là, quand je te disais que les soudures, c'est ce qui morfle le plus. On a perdu le pot d'échappement du Han, ça tape fort. Beaucoup de rochers, les pierres sont très dures. Les soudures ont cassé, on va pouvoir trouver un soudeur à la prochaine étape à Kirchwar ce soir. Et voilà. Et donc Kishu notre mécano officiel va nous réparer ça ce soir. Il l'a vu, moi le son est à peu près pareil. À un moment j'aurais bien regardé, mais pourquoi le pot fait tout ça? On va rouler sans. Dhanyavad Kishuji. Today, the incident did not have any serious consequences, but every little problem in this region poses a potential danger. A few kilometres further, the motorcyclists are faced with a new problem. Work on the road is blocking the traffic in a place where the terrain is unstable and where landslides occur regularly. Donc derrière nous, il y a des éboulements, il y a une équipe qui est en train de déblayer le terrain et en fait ça peut tomber à tout moment, donc il faut se dépêcher. Et on est bloqué là, plusieurs véhicules, on patiente. Donc le stress augmente. Landslides are an ever-present danger. The instability of the mountain, bad weather and numerous works cause rockfalls every day. These landslides are so powerful that they can destroy villages or entire bridges. As seen in this video taken in the same region in the summer of 2021. Johan's the only member of the group to have already travelled the Cliffhanger Road, the infamous cliffside road carved into the mountain. It reaches nearly 500 metres above the valley. He knows the risks and what to avoid very well. Tu regardes pas en roulant, tu t'arrêtes, tu fais ta photo tranquille. Parce que tu n'as pas le droit à la moindre erreur. Tu rates un virage, c'est fini. Hein. Bye bye. Ok. Ah oui, c'est pas que tu peux te faire mal, t'es mort. Un virage, t'es mort. Bon, de toute façon, tu vas voir, le réflexe, c'est de te coller à la paroi. From now on, the group will have to ride as carefully as possible. Pour le cliffhanger, les montagnes russes. Et cette fois, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc, avec beaucoup de sable en plus en descente, très glissant, très technique en fait. One mistake and falling more than 500 metres into the void is almost guaranteed. Le frein tout le temps enclenché. On frôle la falaise. On y va tout doucement. Faire attention à sa bécane. Nickel. Je savais, je l'avais repéré ce virage de loin. Je me suis dit, celui-là, il va pas nous faire plaisir. Et ça loupe pas. Très étroit, très bas de plafond et très rocailleux. Halfway up the road at the highest peak, the bikers are forced to stop.
आपसे बात की किसी से भी बात हुई काम चला यहाँ 5 बजे रोड 5 बजे तक खुल जाएगा उनके साथ बात करने में रुके थे हम आप इंतजार में थे अभी रोड टाइम टेबल होता है A very precarious situation as it's already too late to turn back before it gets dark. Il y a des bulldozers plus lents qui vont travailler un peu plus haut sur la route puisqu'ils construisent une autre route à 300 mètres plus haut de celle-là. Et en fait, il y a des horaires où ils vont bosser et redéblayer la route plus haut et ça va faire tourner les roches. Donc c'est pour ça que la nôtre est bloquée. The tension rises in the team. Nobody wants to spend the night on the side of a cliff. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on peut pas passer alors que les mecs nous laissent passer. Parce qu'ils bossent sur les routes, la route au-dessus. Ouais, mais ils communiquent, je sais pas. Non, mais là, il allait parler au chef de chantier. Là. Non, laisse-le gérer. Non, mais moi, je laisse gérer. Je veux juste essayer de comprendre, en fait, pourquoi... on est à 3-4 km du truc, surtout. Enfin, on est à la fin, là. Ah oui, non, mais il va lui demander, genre, 10 minutes, une fenêtre de 10 minutes. On va négocier. Je garde. They have no choice but to wait and see if they can cross or if they'll have to spend the night here. Donc là, en fait, on est coincé. On a demandé à notre ami, Mohinder, de voir avec le chef de chantier derrière le tournant pour essayer de trouver une solution. Et je pense qu'on va patienter encore 20-30 minutes, le temps de négocier ça. Et j'espère qu'ils vont nous laisser passer. Parce que là, il y a 600 mètres de précipice derrière nous. Mais bon, j'ai pas très envie de dormir ici ce soir. Bref, on va voir. Finally, the group is allowed to pass. There's no time to waste. They only have 10 minutes. With the works taking place higher up in the mountain, landslides can occur at any moment, so they have to be quick. Allez, on se dépêche, on y va. Dernière chance pour passer avant la nuit. And who will tell us from the yellow boat when we can go? I'll go first. Yeah, you go first, but at the yellow boat, there's someone who will give a whistle or? Yeah, we just stop there for everyone and we will cross together. Okay, you go first. In a few hours, the French bikers will arrive in the city of Kishtwar, the first stage of their journey. They will be among the last to travel the cliffhanger road in 2021, as with the winter coming, the snow will make this road even more dangerous. To minimise the number of accidents and deaths, since 2015, Indian authorities have decided to close it down from December to March. It will reopen next spring, when it will once again, as every year, welcome more than 2,000 tourists seeking adventure and breathtaking landscapes.